हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये हमेशा के लिए, हाँ, हमेशा की तरह एक यूनिक सेशन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को यूनिक सेशंस प्रोवाइड करूंगा। और इस सेशन में हम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का जो पेपर एनालिसिस है वो हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट है पृथा और एक दूसरी स्टूडेंट है शीतल। इन्होंने अपने सीयूटी एग्जामिनेशन को ऑलरेडी यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है। और उनका एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता था, इसका कॉम्प्रिहेंसिव हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले शीतल और प्रथा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन सुपर ग्रेड। सो Thank you, sir. Good Thank you afternoon. so much, ओके, sir. सो Good आपका afternoon. बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुआ। बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन, है ना। आप में से कुछ एग्जामिनेशन कुछ लोगों के बचे हैं, बट धीरे धीरे प्रेशर जो है वो आपका यहाँ पर कम हो रहा होगा। सो हाउ हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? It's been a bliss. Actually, it was going hectic from the last few days. It's a bliss now. Okay, and what about you, Sheetal? Sir, I feel like right after board examination, I just got a week to prepare. And for that matter, SuperGrads helped a lot. And tomorrow is my last examination, so I'm a little relieved now. Okay, so best wishes from our side for tomorrow's examination as well. So, guys, now I'm going to give you one timeline कि हम किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज का डिस्कशन है और हम चाहते हैं कि हम जो ज़्यादातर सब्जेक्ट हम दोनों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करें। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था वो यहाँ पर क्या था, मतलब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से पूछे गए और उनमें से किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टाइप्स आपको देखने को मिले। क्योंकि आपने दोनों लोगों ने अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया है, तो आप एक बहुत ही अप्रोप्रिएट आइडिया यहाँ पर दे सकते हैं जिन भी स्टूडेंट्स का जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशन है। सो प्रिथा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। Yes, sir. The examination of history was conducted yesterday. I gave it yesterday, and the paper level was moderate. I won't say it was easy. It was moderate. Different kinds of question came, but those were very depth from NCRT, not the direct ones. Some questions were direct, which you say in your words, Lallu questions were there. Otherwise, it was all indirect questions. Assertion is a not came. Match the following scheme with years conducting the personalities who has done what. Then some questions like one question which I feel like which is out of syllabus is the name of the wife of Dara Shukla. I don't know it's given in book or not. I haven't attended though. And some questions were directly given, otherwise it was indirectly. Like as I said, few questions was one more important problem which I faced is like the options were very close to each other. It was very confusing. And one more important thing in history was like it was very time consuming. Means I finished the exam, I was left with only 11 minutes. So it was quite hard for me to revise the entire thing again. Okay, so Pritha, after listening your experience, I must feel that there were most of the questions which were based on the statement type. Yes, sir. So you have to, Statement-based questions. okay, Yeah. so you Have have to to, read them and then have to answer. Not one line single question. Single questions were there, that only 2 to 3, mostly 2 to 3. Other than that, all were descriptive. okay, so here friends, this is important thing because Pritha जो है वो सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, वो आईएससी बोर्ड से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इतने कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छी तरीके से उसने अपने इस एग्जामिनेशन को यहाँ पर अटेम्प्ट किया, सो दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। और वो जो दारा शिको वाला क्वेश्चन है दैट इज इन सेकंड बुक, सीबीएसई की जो सेकंड बुक है उसके पेज नंबर 240 पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो इनिशियली Okay. इनिशियली वो मिस यहाँ पर हो गया था, लेकिन उसको जब बाद में यहाँ पर चेक किया गया तो वो पेज नंबर 240 पर यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दैट वाज फ्रॉम Okay. सीबीएसई एनसीईआरटी बुक, बट इट्स ओके, मतलब हमने I have not attended, so हाँ I have यस, not done mistake. सो बिकॉज आपने सीबीएसई नहीं पढ़ा, आप दूसरे बोर्ड से हैं, फिर भी आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड Yes, शीतल, it's हाउ वाज? हाँ absolutely हाँ, because of super grades ओके and ओके your contribution. And your contribution, it's indispensable. ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रिथा। सो शीतल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So, fortunately, being from CBSE board and going through NCRTs all through the year, it was I would say it was a easy paper for me. I had my slot in the first half. So, I would say मेरे लिए easy था paper. And questions related to chronological order were there in my test.
most of 4 statements given, and then you have to choose the correct one or the incorrect one out of the 4 or 5 statements given. Paragraph-based questions were there. I would say that paper was not confusing, but reading through NCERT, thorough reading is very important here. And again, year-wise chronological orders were there, and 4 statements given, for example, of KDR, Krishnadev Raya was given according to the temples were giving, location-based questions were there from map. You have to choose Bodh Gaya or Buddhist sites, and chronological questions were mostly there in my exam. So that was there, and fill-ups were there, match the columns were there accordingly, and complete the statement was there if a paragraph-based question is given. So complete the statement was given, choose the correct year was given. So such type of questions were there in the exam. Okay, so guys, I just want to ask one more thing. Some particular chapters were deleted from the CBSE board examination. So what is your opinion? Those particular chapters came in your CUT examination or not? So I don't know about their syllabus, but each and every chapters has equal weightage. Especially, I would say that Vijayanagara, Bhakti, Sufi, all those chapters has more weightage than the other. And some Indian history or ancient history was more emphasis. And colonial, that rebels and the Raj was of utmost important. It was many questions came from that. First question, in fact, yeah, it was there. Choose the Okay. incorrect option out of. Okay, and Yeah. Sheetal, what is your experience? Well, I think that my experience here was that the syllabus which was already included in our 12 boards, except that the major part was from the ones which were not there, which was not covered. So in my test, I thought Rebels and the Raj had majority of the questions. And in fact, the paragraph-based and case study-based questions were there from Rebels and the Raj. Colonialism was there. From Constitution, choose the given statement, who said what. Such type of questions were mostly there because it's a little confusing and boggling up for most of the students. So these questions were there, and apart from this, I think from the first book, location of the sites and Buddhist sites and how many Mahajanpadas, Vijayanagar, and Bhakti Sufism did carry a little more weightage than others because of the names of the rulers and emperors and Mughal sites as well. Okay. So that was it. Okay, so I hope the experience of Sheetal and Pritha gave you a light ki how you should prepare for your upcoming examination. So they gave a brief idea, or I can say comprehensive idea कि कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए, और आप में से अगर कैंडिडेट्स का पेपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन का है, सो दे कैन इजिली अटेम्प्ट देयर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी. ठीक है. सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं, इन्होंने मल्टीपल अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पर एग्जामिनेशन में दिए हैं. जैसे प्रिथा से हम सोशियोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर पूछेंगे, शीतल ने पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर यहाँ पर दिया है. तो मैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस जानना चाहूंगा, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, मतलब उनका नंबर बहुत ज्यादा है. मतलब इससे पहले भी मैंने कई सारे स्टूडेंट के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन किया, तो वो अपना करियर जो है वो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर बनाना चाहते हैं. आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस बी ऑनर्स करना चाहता है क्या? Sir, I would say that preference है, but it's not like a hard and fast rule कि करना ही है. अगर मिल जाए कर लेंगे. अच्छा, and Pritha, what about you? Yeah, my dream is BA Psychology honors, but yeah, backup option is there. Okay, so अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब जो ये कह रहे हैं ठीक है सर, हमारा मतलब विश है, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि अब बस यही करना है. इससे पहले वाले इससे पहले वाले जो स्टूडेंट थे ना, दे आर लाइक कि यार नहीं नहीं अब होना ही नहीं, अब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ही हमें यहाँ पर करना है. सो पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब मैं अपनी क्लासेस में भी यहाँ पर दिखता था, तो मेरी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बहुत सारे लोग होते थे. इसका रीजन ये है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ने में समझने में ज्यादा चीजें हैं और चीजें हमको समझ में आती है. तो शीतल, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? Sir, overall, I would say that again the paper was between easy to moderate only, and I noticed one thing, that a lot of full forms were asked according to the agencies, UN organizations, their establishment years. So more emphasis were given on the years this time in my examination particularly.
I had a word with one of my friends, so she said that uske exam paper mein there were more of policies and ideologies, and more of the Indian part was covered. Okay. Whereas in my, I think it was balanced enough that from both the Indian Constitution book and the World book, the contemporary World book, both were balanced equally. Okay, and the type of questions which came in your examination? Sir, fill in the blanks, match the columns. Again, like 4 characteristics were given, functions of the UN Secretary General. From security lesson, it was asked that which one of the following is not a type of non-traditional security. So you have to pick the odd one out. Again, the chronological order was there according to the years. And then major of the questions were from the UN and from the Indian Constitution book. Also from the World book, there were questions from the first chapter, from the end of Cold War era. Okay. So also a student has to be thorough with the years of the policies of LTBT and all these things. So we have to be thorough with that. And from the Indian Constitution book, again, I would say that most of the part was from the Indira Gandhi lesson. Resurgence was there, and one of the questions of a case study based type was that a paragraph according to the that was given, the Longowal Accord, Okay. Punjab Accord. Yes. So that was there. So 2 type of study based were there, and accordingly, but those were pretty easy to do. Like they were doable enough. Like उसमें ऐसा कुछ बहुत complicated नहीं था. You just have to read the paragraph once, and उससे related questions भी हैं जो उसमें mention नहीं है. Okay. So paragraph and study based questions in both the subjects of history and political science were easy enough to do. And yeah, apart from that, I guess complete the statement type of questions were more there. Match the following and pick the incorrect one. And years, you have to basically focus on years in political science a lot. Okay. And in your examination or in your shift, cartoon-based question also came? So cartoon-based question was there of security lesson. It was there. Security. Yeah, So it was given. what kind of question they asked? Sir, in security, there was this cartoon given and asked that what kind of security has been shown here, and is it like what kind of expenses are being more emphasized on which kind of security in world these days, and how can we prevent security? So उसमें a mixed combination of cartoon was there, so we can easily. It was easy enough to do, I would say. Like उसमें कुछ complication नहीं था इतना. It was very easy to do. Because you have already prepared for your CBSE examination cartoons. Yeah. So it was in practice. Like if we talk about Pritha, if she would have been able to identify the cartoon की कौन से lesson का है, so it is very easy to do. There is nothing major in it. Like it's very easy. So Pritha, you got some experience from Sheetal. Yeah. So this will definitely help Absolutely. in your examination. It will help. Okay, Yeah. so Sheetal, what do you think if one मैं एक student हूँ, I am one candidate who is preparing for their upcoming examination, political science, और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है. If I read multiple times CUET political science book for CUET examination and revise all the important years, all the important events, है ना, सबको एकदम घोल बना के मैंने पी लिया. So what do you think? I can easily attempt 40 questions or not? I think it's easy to do, and political science, in my opinion, is less time consuming than history because उसमें एकदम direct questions थे. The questions were very direct, and you don't have to run your brain twice. If you know the answer, you know it and you mark it, and the next question appears. So if a student is well prepared and have gone through the years and NCERTs thoroughly, it's very easy to do. It's nothing complicated here. Okay, thank you so much शीतल. बहुत अच्छे से तुमने यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी, है ना, क्योंकि पृथा का एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस का बचा है. सो पृथा जो है वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, बट पृथा के पास एक नई चीज है, वो है सोशियोलॉजी, है ना. तो आपका सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो यहाँ पर हो चुका है पृथा. तो यही बेसिक जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर हर सब्जेक्ट में शीतल से आपसे यहाँ पर पूछे, वही चीज मैं सोशियोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर जानना चाहता हूँ. और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी से थे, एनसीईआरटी के बाहर से घूम कर आए थे, है ना, कुछ भी जो भी आपको एक्सपीरियंस है आपका. I would like to add one more thing. Yes. Political facts, अगर एक कोई student read through करके जाए current political facts about the Ukraine and Russia, so that will be helpful as well. There was, I guess,
one or two questions related to that. तो वो prepare करके Can you जाना tell चाहिए. me those questions अगर याद कर पाओ तो? One was a very GK type of question that what is the capital of Russia? What is the capital of Ukraine? तो एक ये था, इसमें match the odd one out था कि pick the odd one out जो इन cities से related नहीं है, country से related नहीं है. So Okay. one is that. Yeah. So the basic information has to be there also. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ये एक है ना वैल्यू एडिशन है, इस तरीके का वैल्यू एडिशन आपको नहीं मिला होगा, तो इस तरीके की चीजें भी आपको याद रखनी है। मुझे याद है कि मैं अपनी क्लासेस में मतलब जो भी कंट्रीज वगैरह होती हैं उनकी हमेशा मैं कैपिटल पढ़ाता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल Exactly. जैसे I अगर आप remembered of these South Asian nations, 7 है ना nations, all टीवी those. क्लिप ऑफ एमबीबीएस, है ना। सो Yeah, हाँ सो एकदम. यही है, जैसे मैं मॉक टेस्ट में भी देखता हूँ Asian. तो मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन था, जैसे आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर एरा जब खत्म हुआ, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो कौन सी कंट्री है जिसमें 2001 से 2011 तक जो है वो मतलब सिविल वॉर की सिचुएशन थी, सो दैट इज तजिकिस्तान। तो आपके मॉक, हाँ, आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ये था कि उस पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल बताओ जहां पर 2001 से 11 तक जो है वो यहाँ पर Hmm. वो मतलब 1991 से 2001 तक जो है वो सिविल वॉर की सिचुएशन हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर है, सो दैट इज वेरी गुड थिंग, प्लीज इसको याद रखिएगा, है ना। इससे आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो प्रथा Also हम the related presidents and prime ministers किस टाइम पे कौन था, तो वो भी there's a point कि there's a point to be noted here कि वो याद होना चाहिए सबको. बिल्कुल सही बात है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि पहले जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रिपेयर करना है, नहीं तो पता चले कि आपने ये सब छोड़ के आप यही सब चीजें करने लग गए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स अकॉर्डिंगली जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो, और ये वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट है, इससे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। She सो has explained very well. Thank you, my fellow mates, Chital. It will help me a lot. ओके, सो है ना, आफ्टर आफ्टर योर एग्जामिनेशन प्रिथा विल सेंड यू रसगुल्ला फ्रॉम बंगाल, शीतल, है ना। सो डू Definitely, एंजॉय I'll be Yeah. waiting. ओके चलो। सो पृथा, हम लोग सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, Hmm. सो व्हाट वाज योर Yeah. एक्सपीरियंस? Sociology as compared to history was very easy. I would say the questions were also direct, but the thing was that it was conceptual based. So reading NCRTs blindly will not help you. You have to be clear with the concepts too. The thing is that some parts of the questions was match the following. Like one question, I remembered the inventors of the discoverers of the newspapers, who were the discoveries, and the newspapers like Sangbad Kaimudi and Shom Prakash, Times of India, Madras Mail, all those, and who has discovered that, all those. Then incorrect options. Two passages came, out of which one I remembered. The questions was like, as I said, it was conceptual. Since I remembered the passage, it was of 2 to 3 lines, not more than that. It was saying that a name of village, and it consists of 150 members, and out of which 120 members has migrated to Bombay and Calcutta for the search of jobs. So what kind of change you are feeling? Is it industrialization, or it's urbanization, commodification, like such kind of examples? Okay. So concept must be clear for each of the one. And the other questions was like choose the correct options, and from the incorrect ones also the incorrect options from the correct ones. It was given, and which of the things was correct and false. True false was there also. Filling the blanks is years are of utmost important in sociology. Yeah, it was there. It was less in number than political science, but it is important. Okay. And no cartoon based questions. So we practice so much. You have Because in given us sociology there is marks. no cartoon. No cartoon based. No, neither in history nor in socio. ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एनडीए एग्जामिनेशन का जो एक पैटर्न है, क्वेश्चंस का पैटर्न, Yeah. किस तरीके के क्वेश्चन पूछने, दे आर सिमिलर, Hmm. है ना। मतलब हिस्ट्री में भी Yeah, सिमिलर है, पॉलिटिकल साइंस में सब चीजें हैं। absolutely. एंड वन मोर Hmm. थिंग इज, कई सारे सोशियोलॉजी में कई सारे स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अदर देन प्रथा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे Hmm. हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट, है ना, मतलब उसमें कुछ बताया नहीं गया है, बुक्स में पढ़ाया नहीं गया है, बट मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, है ना, 50 तो वैसे भी नहीं Yeah, करने हैं, there है ना। yesterday this kind of questions were two there. So it's better, and as I took opinion of yours also, that it's better to avoid those, and I left those in those 10. ओके, सो 10 में वो आ जाएंगे और आप यू कैन इजीली Yeah. अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। और फिर भी अगर मतलब कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो फिंगर क्रॉस। सो हाउ वाज योर एग्जामिनेशन, बोथ आर यू सेटिस्फाइड?
I am satisfied a bit more in social and a bit less in history because I expected more in history. It's more or less, I'm good, satisfied, well And Sheetal, what about you? contented. Sir, I would say if a student has read through the NCRTs and covered major of the mock tests are one of those gems here by SuperGrads ki wo ekdam hi matlab perfect kar dega. Yeah, So absolutely. that is one thing, and I think the overall experience was pretty satisfying. I'm expecting a good solid score this time in both history and political science. The time management has to be there for both the exams, and you have to, if you have given 45-50 minutes for it, utilize it as much as you can. So ओके yeah. हाँ, तो यहाँ पर ना सुपर ग्रेड्स के मॉक टेस्ट के बारे में बात हुई है। सो पर्सनली Mhm. मैंने सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर देखे हैं, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर ये लोग बता रहे Absolutely. हैं। तो All those एक ACTS, VCTS are like The series one-stop solution, yeah, one-stop solution, है and ना, specially directed by you. Yeah. एंड And सीसीटीएस। all those, हाँ, yeah, CCTS was a bit hard for my skills, so I avoided it. Uh, Other than that, it was pretty well, and I attended all those live YouTube sessions. Those were called guest papers. It गेस्ट पेपर was सीरीज yeah. indispensable. Yeah, it was super helpful. एंड Even direct हाँ questions came, which you have practiced in direct. That same line came. I was thinking, oh my god, how can sir know this paper? हाँ, मतलब But yeah, सीरियसली, मतलब वाइल वाइल नरेटिंग योर टेल्स, वो ठीक है, होता है. मुझे ऐसा लगा कि मतलब कई सारी चीजें जो है वो मैंने क्लास में बोली थी कि इनको पढ़ लेना, है ना, Exactly. ये And आएंगी that पेपर same में, line एंड came. डेट केम Same दैट डे, line came. है ना। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप उन्हीं That भगवान was है। great papers. Yeah, questions and वही आता absolutely. है ना, It's मतलब a सीरियसली, है Absolutely. ना, मतलब अभी शीतल ने बताया कि वो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट केम, कि भाई किसने किसके बारे में बात करी थी, किसने कौन कौन सी लाइन Hmm. बताई थी, है ना, हमने गेस्ट हाँ पेपर में किसने भी क्या करी थी। कोटेशन दिया था तो ये सब तो अच्छा, एक चीज मैंने ये देखी सीसीटीएस में, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के, मतलब कभी मैंने ऐसी बताया नहीं किसी को, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, सीसीटीएस पेपर देख के ना, मतलब लोग बहुत दुखी हो जाते थे, है ना, मेरे पास बहुत मैसेज आते थे लोगों के, I was अरे अरे I सर am ये one क्या of them. पेपर है, मतलब इसमें तो हम लोग एकदम ही वो हो गए, नंबर ही कम हो जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। और मैंने सब लोगों को बस यही बताया था, बस पेपर पढ़ते जाओ और जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते जाओ, किसी में कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, ये तुमने कर लिया तो फिर पेपर में तुम्हारा तो बच्चों वाला लगेगा, absolutely है ना, मतलब पांच पांच Absolutely. Yeah. सेंटेंस हमने दिए, हमने वन लाइनर क्वेश्चन नहीं दिया आपको, पांच पांच सेंटेंस थे, ए बी सी डी ई, yes sir आपको ये yes बताना है Hmm. कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और यहाँ पे तो तीन चार Absolutely. लाइन बस, है ना। सो ये है, तो मुझे लगता है, आर यू सेटिस्फाइड विद सुपर ग्रेड्स, definitely sir, Absolutely. It's undoubtedly है ना। undoubtedly अब yes. जब मतलब वो And रिजल्ट आएगा तो और आपको अच्छा लगेगा, कि मतलब बस हो गया, अब सेट। fingers crossed Actually, for me, if I would say, then I have joined this course right in last year, 8th of August. I remember the date, but I have started taking lessons from 1st of April this year after completing my boards. So गुड्स, the journey of 60 days with Abhishek sir, I would say your name, and along with Supergrad's complete guidance with my mentors, it's totally, totally unbelievable. They are all time 24/7 ready to help. ओके And प्रथा, थैंक यू it's सो मच, है ना। बस मतलब मैंने क्या होता है कि टीचर तो अपनी तरफ से मेहनत करते ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन absolutely. होता है टीचर को मोटिवेटेड रखने के लिए। पृथा, शीतल, है ना, देवर रेगुलर स्टूडेंट्स, और आप देख ही सकते हैं ना, मतलब जब रिजल्ट आएगा तो अभी जितना हंस रहे हैं ये लोग, इससे ज्यादा हंसेंगे, है ना। हो सकता है कि हमें मतलब फिर और बड़ा स्क्रीन यहाँ पर करना पड़े। सो ओवरऑल, सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ यू ऑल, एंड Yeah. हमारी पूरी सुपर ग्रेट्स टीम के साथ बेस्ट विशेस हैं आपको। आप thank you so मतलब Thank much you so आप very एक एक much. लाइन में अगर कुछ मैसेज यहाँ पर आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनके एग्जामिनेशन है, या फिर जो आप ये मान सकते हैं कि जो जूनियर्स हैं आपके, है ना, जो इस बार एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए कोई एक लाइन दो लाइन में कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें तो। Oh, okay. So if I would say then one or two lines. Firstly, NCRTs are your like guru devs. So हम्म, you have to mug up everything from your NCRTs and conceptual based questions. Everything will get be prepared. Keep in touch with Supergrads. You'll do everything. Nothing else required. Keep in touch with Abhishek sir. Keep in touch with NCRTs. Revise thoroughly, and you will done. You'll be done. ओके, सो प्रथा That's it. प्रथा प्रथा रोट वन एसे, है ना, वन और टू लाइन की जगह पे। थैंक यू सो मच प्रथा, और बेस्ट विशेस फ्रॉम होल सुपर ग्रेड्स टीम, है ना। इसी तरीके से Thank आप you एकदम so very चमकते much. रहो, चमचमाते रहो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। एंड So शीतल, thank नाउ योर टर्न। Sir, to sum up all this discussion right now, I would say that firstly, believe in yourself. As you said about the CCTS series, it was difficult, but
I would like to give a tip to the juniors here or to the ones who will be giving the exam that if you're taking up the series wala test, so do CCTS, do ACTS and attempt a mock. So that way it will be managed कि अगर आपके CCTS में कम भी marks आ रहे हैं तो फिर एक easy वाला कर लो तो थोड़ा confidence balance रहेगा. So that helped me prepare a lot of mocks, give a lot of mocks at the last 1 week. You will definitely score good. Keep in touch, as Pritha said, that keep in touch with the mentors and especially you. And yeah, that was pretty much it. And the overall experience for me with SuperGrads was for a month. I took a crash course. So the mock tests were the main gem for me here. Okay. So that was it. ओके सो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर बताया, जो अपकमिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करेंगे, है ना। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाला मेरे लिए अपने इस बिजी शेड्यूल में, है ना। Anytime, sir. थैंक यू सो मच एवरीवन, और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात It करके। was pleasure talking to you. अभी तक सिर्फ आप लोग मुझे सुनते थे क्लास में, आज मैंने भी आप लोगों को सुना एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना, कि मतलब मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना, उन लोगों की ऑडिटिंग स्किल्स वगैरह और एक्सपीरियंस शेयर करना वगैरह इज ऑन ट्रैक, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच गाइस एंड वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम Yeah. ऑल होल सुपर ग्रेट्स टीम। आप इसी Thank you तरीके से so आगे much. बढ़े एंड कीप इन टच, Thank you so much. है ना, और आपका रिजल्ट आए तो और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आप हमें भेजें, ठीक है। सो Definitely, sir. And sir, I'm from Definitely. Bharat, sir, so मैं तो कभी भी आ सकती हूँ. ओके ओके ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे Yeah. सेशन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।